Good evening, everyone. Welcome to IP Match by LPT, a channel dedicated to the preparation of IPM. My name is Neelam, and I'm going to be your trainer for vocabulary building. We started this Vocab Booster series this Monday, and every day at 5 p.m., I'll bring you some words from age-old book, Word Power Made Easy by Norman Lewis. We did a lot of words with pictures, different references, as well as roots. So every day you should log in to this channel to watch this specific session dedicated for vocabulary building. In IPM, you will have numerous questions based solely on vocabulary. To excel in that part, you need to have command over vocabulary. You need to know their usage, their meaning, and you also need to know words in order to understand the passages, right? So vocabulary building will have twofold impact on your understanding, doing vocabulary questions as well as doing well in RC questions. Okay, so you can't afford to miss this session. All right, so in today's session, first we are going to revise the words that we did yesterday, and with that, after that revision, we will also do 5 more questions, 5 more words, and more words with their roots. Okay, so let's get started with today's session. Okay, so we did this word disparage. Disparage is to put somebody down, to belittle someone, to demean someone. किसी को नीचा दिखाना, उसके confidence को kill करना, उसकी achievement को छोटा दिखाना या उसके stature को कम करना. ठीक है, जैसे ये picture है, it's very clear कि all thumbs down are putting the person down. ठीक है, और हम लोगों ने फिर इसी root word pair से parity, disparity, par excellence and disparage ये सारे words किए थे. ठीक है. Another word was equivocating. Equivocating is clear बात ना करना, बराबर की बात करना, इस तरफ भी बात करना, उस तरफ भी बात करना. Basically sitting on fences. You don't categorically say what you feel, or you don't actually bluntly tell someone what you believe, right? So that is equivocating. दोनों तरफ की बात करना, इधर भी उधर भी, sitting on fences, ताकि आप किसी को डिस्टर्ब ना करें या पॉसिबली किसी को अपसेट ना करें या किसी के साथ अपने रिश्ते ना बिगाड़ें. Equivocating. The root word here was voc, and with this root we did vociferous. We also did vocal. Vocal is somebody who is very aggressive in speaking. Equivocate बराबर की बात करना, unequivocal clear बात करना. ठीक है? So with this root we did 4 words. Titillate, anything which is tempting, anything which makes you want to have something. That is what titillate is. This picture is titillating picture of chocolate. ठीक है? So titillate, anything which lures you, which entices you. Adulate, जैसे picture है, adulate is to hero worship, to praise somebody, to applaud somebody, to appreciate someone. किसी को बहुत ज़्यादा तारीफ करना, hero worship करना, उसको lionize करना, उसको admire करना. But usually not a very positive word, क्योंकि it borders on sycophancy. It borders on bootlicking. आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चमचागिरी कर रहे हैं किसी का फेवर गेन करने के लिए, इसी वजह से एड्यूलेट करना यूज होता है. ठीक है, एड्यूलेट वर्ड यूज होता है when it borders on flattery. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड was proscribe. The picture suggests stoppage of something. ठीक है. So this is basically for when something is banned, something is prevented from happening. So that is proscribed. Scribe इसमें root था, हम लोगों ने word किया था scribe for author, circumscribe for limiting something, prescribe for recommending something in writing. So all these words were related with scribe. Root word scribe means writing something. Inscribe भी हमने किया था. Inscribe is basically for writing something on surface. ठीक है? So these were the 5 words, and with these 5 words and these 2 roots, 3 roots, we learned couple of other words as well. ठीक है? So let's start with today's session. The first word for today is obviate, right? So the picture I hope is clear to all of you. An apple a day keeps the doctor away. ठीक है? So अगर आप एक apple खाते हैं तो that is going to obviate your need to visit a doctor. You will not have to go to a doctor. राइट. सो बेसिकली ऑब्विएट का मतलब है जब आप किसी चीज़ को ऑब्विएट करते हैं, यानी आप उस चीज़ को होने से रोक लेते हैं. अगर आप हेलमेट पहनते हैं, सो दैट इज़ गोइंग टू ऑब्विएट एनी चांसेस ऑफ हेड इंजरी. अगर आप सीट बेल्ट पहनते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू ऑब्विएट एनी चांसेस ऑफ इंजरी.
right? So that is going to prevent you. तो obviate is to prevent something from happening, to preclude something from happening. ठीक है? So किसी चीज़ को आप बचा लेते हैं होने से. So that is what is obviate. So if you keep revising these words and if you keep attending this session every day at 5 p.m., that will obviate any chance of faltering in vocabulary section of IPM, right? So I hope you get the message loud and clear here. So obviate यानी अगर आप ये words follow करेंगे, revise करेंगे, ये session रोज attend करेंगे, तो आप falter नहीं करेंगे, आप fail नहीं होंगे IPM section के, IPM exam के vocabulary section में, ठीक है? So obviate. So use this word in those circumstances when you want to prevent something from happening. ठीक है? So हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया था कोरोना के समय में so that it could obviate further infection. ठीक है? So obviate is to prevent something from happening. All right? Okay. The next word is militate, right? So militant basically आपने सुना होगा क्या होता है militant, right? But there is a fundamental difference between terrorism and militancy. ठीक है? Militant basically fight with their own country, with their own army or with their own armed forces. ठीक है? अपनी ही country के law and order के खिलाफ वो लड़ते हैं. And when they fight with their own country, they militate. Whereas terrorism is something which is based on other country, right? Which is the violence which is perpetrated by other countries. So that is what is terrorism, right? So what Pakistan does on Indian soil is terrorism. That's not militancy. But what happened in Punjab when Punjab wanted to have a separate state because they were fighting with their own country law and order, with their own country's army or with their own country's police, that was militancy. Naxalism is also militancy, ठीक है? But Naxalism is not terrorism. So बेसिकली मिलिटेंसी होता है जब आप खुद से लड़ते हैं, खुद की कंट्री, क्योंकि आप भी उसी कंट्री का पार्ट हैं, आप भी उसी सिस्टम का पार्ट हैं, अगर आप उसी से लड़ रहे हैं सो दैट इज़ व्हाट इज़ मिलिटेंसी. सो उसी से ये वर्ड आया है मिलिटेट. एनी पर्सन हु किल्स हिज ओन चांसेस ऑफ सक्सेस, हु डज समथिंग रॉन्ग टू फेल, राइट? एन टाइम पे वो कुछ ऐसा करता है या एन टाइम पे वो कुछ ऐसा कहता है जिससे उसके चांसेस ऑफ सक्सेस ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है? सो ही मिलिटेट्स अगेंस्ट हिमसेल्फ, वो खुद के खिलाफ ही कुछ ऐसा करता है जिससे वो अपनी चीज़ों को बिगाड़ देता है, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट इज़ मिलिटेट. सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, यू वियर समथिंग विच इज़ शैबिली, which makes you look shabby, or something which is not ironed, which is not neat and clean, or you say something which is going to irk your interviewers, something which is going to be counterproductive for your candidature or for your selection in the interview, you militate your chances. कुछ ऐसा बोल देना इंटरव्यू में, आप you are towards the success, possibly you are winning everyone in your favor, but you say something which is going to just be against your candidature, so that you militated against yourself, you militated your chances of getting through the interview. ठीक है? कई लोग ऐसे होते हैं जो कई ऐसे एक्शंस करते हैं नोइंगली और अननोइंगली जो उनको खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रॉय करते हैं, खुद को ही सेल्फ हार्म करते हैं. सो दे ऑल्सो मिलिटेट देयर चांसेस ऑफ गोइंग अहेड इन लाइफ, गेटिंग अ गुड हेल्थ और पॉसिबली हैविंग एन एडवांस करियर. ठीक है? सो जब आप ऐसा करते हैं अपने ही खिलाफ, सो दैट इज़ मिलिटेटिंग अगेंस्ट. ठीक है? सो ये वर्ड आया है मिलिटेंसी से. आई होप यू आर क्लियर विद द डिफरेंस बिटवीन मिलिटेंट एंड टेररिज्म. बोथ आर डिफरेंट, राइट? सो जो नक्सलिज्म है वो हमारी ही प्रॉब्लम है, विद इन इंडिया डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, सो दैट्स वाई दैट्स मिलिटेंसी. बट समथिंग विच इज़ imported to India from other countries, that is terrorism. ठीक है? So militate is second word for today. Militate means to self-harm, doing something which harms your own chances, to prevent something, to make it difficult for something to happen or exist. So अगर हम ये बोलें कि corruption militates the chances of good governance, तो करप्शन की वजह से गुड गवर्नेंस के चांसेस कम हो जाते हैं, वो प्रिवेंट करता है उसको, तो उस सेंस में भी मिलिटेट आ सकता है. ठीक है? All right, let's move on to the next slide. Malign. As the picture suggests, two girls are talking about third person. The person is sitting there and the person is reflected to be evil. ठीक है? So in their head, the person is
projected to be evil, though the person is not, may not be evil, but he is projected to be evil. Okay? So what these girls are doing basically, they are trying to tarnish the image of that person. Tarnish is same as malign, right? जब आप किसी की इमेज को खराब करते हैं, you try to blacken someone's reputation and you know say something to disrepute the image they have built, right? So that is what is malign. Malign someone's image, malign someone's reputation, malign someone's name, right? So this is what malign means. Crude language में किसी को बदनाम करना, ठीक है? So malign and tarnish are both same. Both can be used for defaming someone. किसी की image को खराब करने के लिए, किसी के stature को sully करने के लिए, ठीक है? So here again comes a very, very interesting root. Mel. ठीक है? If you recall this root having some words, if you recall some words having this root, you will find out that this root comes for something negative, right? Malnutrition. When there is lack of nutrition, that is malnutrition. And if I say malfunction, when something is not functioning properly, it's malfunctioning. Okay? So these are the words that you know: malnutrition and malfunction. Okay? Now there could be other words that you do not know. If I give you a word diction, तो अगर आप बहुत अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं और आप पब्लिक स्पीकिंग में जाना चाहते हैं, तो यू नीड टू वर्क ऑन योर डिक्शन. So diction is the way you pronounce words, how clearly you enunciate words, right? So that is what your diction is. So diction is about speaking. ठीक है? Dictate करना किसी को, बताना कि क्या करना है. ठीक है? So dictate, dict is coming here for speaking. ठीक है? So if I give you a word maledict or malediction, so diction is for speaking, mal is for bad, right? So malediction, that means speaking bad, right? So the word is for cursing someone. जब आप किसी को curse करते हैं, बुरा बोलते हैं, उसके बारे में बुरा सोचते हैं, so that is malediction. ठीक है? हैरी पॉटर, आई एम श्योर आप सबने पढ़ी होगी. And because of the malediction of that witchcraft, the person turns into a frog, right? So that is what is malediction. Malediction, cursing someone, किसी को बुरा बोलना. Diction is for speaking, mal is for bad, right? Another word for mal is malevolent. So malevolent is innate desire to harm someone, to cause damage to someone. किसी के लिए बुरी इच्छा रखना और उसको harm करने की कोशिश करना. That is what malevolent is. Malevolent intention of terrorists, malevolent intentions of our competitors, right? So malevolent basically means to cause damage to someone. किसी को harm करना, किसी के लिए बुरा सोचना. आपके action डायरेक्टेड होते हैं किसी न किसी के लिए कुछ गलत करने के लिए. सो दैट इज व्हाट मेलवोलेंट इज. ठीक है? सो वी हैव दीज वर्ड्स विद MAL. वन इज मलाइन, बदनाम करना, किसी को टार्निश करना इमेज को. मैल न्यूट्रिशन, व्हेन देयर इज लैक ऑफ न्यूट्रिशन. मैल फंक्शन, व्हेन समथिंग इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. मैलेडिक्शन, किसी के लिए बुरा बोलना. मेलवोलेंट इज हार्मिंग समवन. ठीक है? अनदर वर्ड विथ मैल इज melody. Now, how root word comes very handy here. So, if you come across a very new word, extremely alien word in your exam, but it has this root. So, with this root, you can at least eliminate those options which are positive, the meaning or the synonym or the antonym. I mean, you can work around with the options since you know the meaning of the root, right? So, with that, it becomes far easier for you to guess the meaning of the word, and invariably you will be right because your meaning or the guesswork will be based on some logic. ठीक है? So malady, let's say एक नया word आया आपके सामने and I give you the option, you can easily eliminate the option which are positive, right? So malady here means disease, right? So we all fought with a malady called coronavirus in 3-4 years ago, right? So that is malady, bimari, illness, ailment. Another word, Malinger, right? That's a new word for you, right?
सो अब मुझे ये बताइए, जैसे मैंने अगर आपको दो मीनिंग दिए इसके पॉसिबल, अ बैड वर्कर और अ गुड एम्प्लॉई, कैन यू टेक अ गेस व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ मैलेंजर? ऑफ कोर्स, since ML comes for bad, you can easily take a guess, educated guess at the meaning of the word. Malingerer is an employee who keeps on dilly-dallying his work. अपने काम से बचता है, चोरी करता है, evade करता है अपनी responsibility को, और बीमार होने के बहाने बनाता है. A person who pretends to be ill all the time in order to shirk his responsibility, right? So a person who feigns illness some or other way and tries to evade his responsibility at work. So bad employee, right? An employee who always invents excuses and tries to evade from his duty, dodge from his responsibility, right? So malenger. So how many words you have with mal? Can you see that? Malfunction, malediction, malevolent, malady, malenger, and malign. With one root, you get the entire family of words. Okay? As I have been emphasizing, root word is very, very effective. You possibly might have started to realize how effective it could be for building vocabulary. With one root, you learn a lot of words, right? You might have been hearing about root technique कि etymology से words करो, etymology के through words को करना बहुत easy हो जाता है, but I guess with this session, it helps you to understand how it becomes very effective to do words with these root techniques, right? चलिए. Militate, obviate, this. Next word is condoned. Condone, right? All right. So condone basically means, जैसे यहाँ पे एक picture है, it's past, right? It's past means things are given go ahead, right? I'll just give you the meaning. Possibly with the meaning, you possibly will be able to understand the word clearly. ठीक है? So छोटी मोटी mistakes को तो ठीक है नज़रअंदाज किया जा सकता है, ठीक है? कि किसी ने sharpener चुरा लिया, pencil चुरा लिया. When somebody steals cash or mobile phones, so possibly that's a grave mistake. That's a very grim crime, right? And possibly that cannot be condoned, right? Condone basically means नज़रअंदाज करना. तो यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपको कि such mistakes cannot be condoned. Petty theft, pilferage can be condoned, but when it comes to serious crime, that cannot be condoned. ठीक है? So यहाँ पे condone का मतलब है नज़रअंदाज करना, overlook करना. ठीक है? So that is what is condone here. ठीक है? I hope the meaning is clear to you. Condone basically means किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, ओवरलुक करना, आगे बढ़ना, ये सोच के कि पॉसिबली थिंग्स आर नॉट वेरी सीरियस. ठीक है? ऑलराइट, you can see the picture what this lady is doing to the other lady in the picture. She is offering flowers because this lady looks very miffed, annoyed, a little annoyed, and this lady, or male rather, that's not the lady but male, is offering flowers, beautiful flowers, to placate her, right? Placate जो वो कर रहा है exactly वही उसी एक्शन को बोलते हैं. किसी को मनाना, किसी को लुभाना, किसी के गुस्से को कम करने की कोशिश करना. Because the person is angry, the person is upset, or the person is disgruntled with you because of your action, you try to do something to soothe them, to mitigate their anger, to alleviate their unhappiness. ठीक है? So that is what is placate. ठीक है? किसी को मनाना. जब कोई गुस्सा हो जाए, आप उसको मनाने की कोशिश करते हैं. That's what is the meaning of placate. ठीक है? So placate is same as pacify. ठीक है? तो pacify आपने सुना होगा, पैसिफिक ओशियन से आया है. पैसिफिक ओशियन को हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर. प्रशांत, शांत करना किसी को. ठीक है? आप जब गाड़ी में भी डालते हैं तो पैसिफायर डालते हैं. जब कार्बोरेटर गर्म हो जाता है तो आप उसमें पानी डालते हैं. So pani works as a pacifier. So pacifier basically means to soothe something. ठीक है? To try to soothe something, try to alleviate something, उसके negative effect को कम करने की कोशिश करना. That is what is pacify. ठीक है? Pacify का ही same word है placate. ठीक है? अब हम इसके साथ कुछ रूट करते हैं. आपने एक वर्ड सुना होगा प्लेसिबो. ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि दवाइयों में एक्चुअली कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती है. ठीक है? वो दवाइयों में सिर्फ शुगर होती है. लेकिन जब वो दवाइयाँ किसी को दी जाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमें डॉक्टर ने दी है, और वो उसको लेके ठीक भी हो जाते हैं,
ठीक है. सो दैट इफेक्ट इज नोन एज प्लेसिबो इफेक्ट. शांत करना किसी को. ठीक है. कई बार ऐसे ओल्ड लोग होते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियाक लोग होते हैं, जिनको एक फियर होता है, इरेशनल फियर होता है कि उनको कोई ना कोई बीमारी है. And because of that fear, they often visit doctors, but doctors do not find any organic reason for any disease. They are completely hale and hearty. But nonetheless, to alleviate their fear कि they are, they possibly have some disease, वो उनको कुछ ना कुछ दवाइयाँ दे देते हैं, और वो दवाइयाँ प्लेसिबो कहलाती है, बिकॉज दे हैव प्लेसिबो इफेक्ट. तो प्लेसिबो इज किसी को शांत करना. ठीक है. प्लेसिबो इफेक्ट यानी वो इफेक्ट जो किसी के वरी को शांत कर दे कि हाँ ठीक है, अब मुझे बीमारी नहीं है, बिकॉज आई एम टेकिंग दिस मेडिसिन. ठीक है. सो प्लेसिबो इफेक्ट. सपोज द लेडी हु इज शोन इन द पिक्चर, वो नहीं मानती है. ठीक है. और वो तब भी गुस्सा रहती है. सो शी इज implacable, right? Implacable basically means somebody who is not pacified. इतना गुस्सा है वो. He is so upset. Possibly the things were really serious, and or possibly there is a huge rift between these two people, and that's why the lady is implacable. Implacable enemy, जिसको आप शांति नहीं कर सकते. ठीक है. बिकॉज द पर्सन इज सो फ्यूरियस, ही इज सो एंग्री दैट ही कैन नॉट बी पेसिफाइड. ठीक है. उसका गुस्सा बहुत दिनों तक चलेगा, एंड पॉसिबली शायद कभी वैसी सिचुएशन फिर से रिस्टोर नहीं हो पाएगी. ठीक है. सो इम्प्लिकेबल एनिमी और इम्प्लिकेबल कस्टमर, कोई कस्टमर अगर सर्विस खराब है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया है, एंड आप कितना भी उसको मनाने की कोशिश करते हैं, बट ही डज नॉट रिटर्न. सो दैट इज़ इम्प्लिकेबल कस्टमर. ठीक है. जो इतना गुस्सा हो गया है कि अब आप उसको शांत नहीं कर सकते. ठीक है. सो प्लेकेट, प्लेसिबो, इम्प्लिकेबल, ऑल वर्ड्स कम फ्रॉम दिस रूट, दैट इज PLA. ठीक है. सो 3 words with 1 simple root, and we also learned another word, that is pacify. ठीक है. All right. So this was the last word for today. We did 5 words. Let's quickly revise them. Obviate, किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, होने से बचने, मतलब बचाना. जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप ये वर्ड्स को रोज़ रिवाइज करेंगे तो इट विल ऑब्विएट एनी चांसेस ऑफ फॉल्टरिंग इन वोकैबुलरी. यू विल नॉट फंबल फॉर वर्ड्स, यू विल नॉट ग्रो फॉर वर्ड्स व्हेन इट कम्स टू योर वोकैबुलरी. यू वुड बी वेरी फ्लुएंट, यू विल बी यूजिंग दीज वर्ड्स विद utmost rapidity when you start revising these words. ठीक है. तो obviate, it will obviate any chances. Obviate basically means preclude. ठीक है. सो आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इज़राइल फ़िलिस्तीन के बीच में जो है वो सीज़ फायर हो जाए, एंड इवेंचुअली यूक्रेन एंड रशिया के बीच में भी, सो दैट any chance of having a third world war in this century can be obviated. ठीक है. So that these issues are not escalated further, and there could be a diffusion of the matter, so that third world war could be obviated. ठीक है. Obviate is to prevent, preclude, कुछ ऐसा करना जिससे कोई चीज़ होने से बच जाए. Militant, जैसे मैंने आपको बताया, militate is to doing something against your interest, doing something which obviates your own chances of success, जो आपकी खुद के chances को ख़त्म कर देता है. ठीक है. Malign is to tarnish, blackening someone's reputation, किसी की इमेज को खराब करना. और MAL के साथ malevolent, a person who does something wrong. Malady, बीमारी. Malenger, somebody who feigns illness and tries to evade from his duty. Malediction, बुरा बोलना. Malnutrition, आपको पता है. Malfunction, कोई भी चीज़ जब खराब हो जाती है, आपका फ़ोन malfunction कर सकता है, लैपटॉप malfunction कर सकता है, कैमरा जिस पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, that can also malfunction. ठीक है. तो mal is always for bad. Condone, नज़रअंदाज करना, ओवरलुक करना. ठीक है. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि such crime, such grievous crime, such heinous crime cannot be condoned. छोटे मोटे petty criminals could be overlooked, but such things cannot be condoned. So condone basically means किसी चीज़ को अवॉइड करना. प्लेकेट, किसी को शांत करने की कोशिश करना, स्पेशली समवन हु इज एंग्री. प्लेसिबो इज वो जो चीज़ आपको शांत कर दे. इम्प्लेकेबल वो पर्सन जो शांत ना हो सकता हो. ठीक है. I hope with these 5 words and couple of roots you learned a few words today. I just hope that this session is helping you. If you keep revising the words, make notes,
And keep on using these words in your active vocabulary, in your sentences, when you chat, when you send messages, when you post something on social media. Try to make use of these words, right? Initially, you may be not sure about the meaning, may not be sure about their usage as well, but look up the word in the dictionary, right? See how they are used in different contexts and then get the awareness. Once you make these words your own, किताबों से अपने दिमाग में बिठा लोगे, अपनी ज़बान पे ले आओगे, जब तक ये नहीं होगा, ये वर्ड्स तुम्हारे नहीं बनेंगे, हमेशा टेक्स्ट बुक में ही रहेंगे. Make these words your own, and that can only be done when you keep using these words. Okay, thank you very much for being so receptive. See you tomorrow with more words, with more expression, with more phrases. Thank you.